हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केम साइक्लोपीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स लेके आए हैं और ये रिक्रूटमेंट आईजी कार कल्पक्कम से है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइजेशन है। इट बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। सो लेट अस सी द रिक्रूटमेंट इन डिटेल। सो स्टूडेंट्स, advertisement number for this recruitment is 2/2021 and last date for apply is 14/5/2021 and ये 15th April से start हो रहा है। For chemistry students, we will be focusing on this recruitments, technical officer and stipendiary trainee. Total इतने सारे vacancies है। You can download this advertisement PDF from the description of the video and you can read thoroughly. Okay, we will be focusing on chemistry related recruitment in our video. Let us see the recruitments one by one. So पहले हम लोग टेक्निकल ऑफिसर सी का रिक्रूटमेंट देखते हैं। So देखो, टेक्निकल ऑफिसर सी, इट इज अ ग्रुप ए पोस्ट। पोस्ट कोड है TOC02 and discipline is chemical discipline. And for this, the total number of vacancies are 3, one for unreserved और one OBC के लिए है, and for EWS there is one vacancy. Required educational qualifications are BE or BTech with minimum 60% marks in respective discipline from the recognized university. ठीक है। And for chemistry students, total number of vacancies कितना है? 1 है, and this is for unreserved. And the essential qualification is BSc with 60% marks with maths and physics as an ancillary subject and MSc in chemistry, चाहे वो जनरल में किया हो या अप्लाइड केमिस्ट्री में किया है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल एंड एनालिटिकल, इनमें से कोई भी ब्रांच चलेगा। इट शुड बी विथ मिनिमम 60% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ओके, कैंडिडेट्स विथ MSc और इंटीग्रेटेड MSc इन पॉलीमर, मेडिसिनल, फार्मास्यूटिकल, बायोकेमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। दिस पॉइंट यू हैव टू सी। ठीक है, फिजिक्स कैंडिडेट्स के लिए भी है, देख लेना। नाउ minimum age limit is 18 and maximum age limit is 35 years on the last date of receipt of online application, and the salary is 56,100. It is level 10 of the pay matrix plus other allowances such as dearness allowances. तो इसमें HRA रहता है, home rent allowance, traveling allowance, etc. ठीक है। Let us see the scheme of examination and method of selection. The process of selection involves 2 stages. First stage is a written test and second is a personal interview. The test will be of 2 hours duration, comprising of 75 objective type questions in a respective subject, and each question will be awarded 3 marks for a correct answer and -1 for the incorrect answer. So अगर कोई क्वेश्चन करेक्ट होता है तो +3 होगा, अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो -1, मतलब टोटल 4 मार्क्स का लॉस हो जाएगा। Marks scored in the written test will be used for shortlisting the candidates for personal interview, and the final selection list shall be on the basis of marks secured in the personal interview. ये हो गया टेक्निकल ऑफिसर का। अभी हम लोग देखते हैं स्टाइपेंडियरी ट्रेनी का। बाकी के भी पोस्ट आप लोग पढ़ लेना। इफ अदर पोस्ट आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट, यू कैन शेयर दिस विथ योर फ्रेंड्स ऑल्सो। सो देखो, डिटेल्स ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट कोड फॉर द स्टाइपेंडियरी ट्रेनी। तो पहला हम लोग देखते हैं स्टाइपेंडियरी ट्रेनी कैटेगरी 1, दैट मींस कैट 1 ट्रेनीज। इसमें पोस्ट कोड है कैट 101 एंड इट डिसिप्लिन केमिकल डिसिप्लिन है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 3, 1 फॉर अनरिजर्व्ड, 1 फॉर OBC एंड 1 फॉर ST। सो एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग और केमिकल टेक्नोलॉजी। ठीक है। सो लेट अस सी फॉर केमिस्ट्री। पोस्ट कोड है कैट 106, केमिस्ट्री है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 3, 1 for unreserved, 1 for OBC and 1 for ST. And the essential qualifications are BSc chemistry from a recognized university with minimum of 60% marks, and in BSc chemistry has to be a main subject and physics and mathematics are the ancillary subject. मतलब BSc first year और BSc second year में one of the subjects should be physics and mathematics. ठीक है। For this minimum age limit 18 years and maximum age limit 24 years. As on the last date of receipt of online application. ठीक है। And for category 1, the method of selection कैसा रहेगा? It also involves 2 stages. पहला रहेगा written test and दूसरा रहेगा interview. Test will be for 2 hours. It consists of 100 objective type questions
in respective subject, and each question will carry 3 marks for the correct answer and 1 mark will be awarded for a wrong answer. Marks scored in the written test will be used for shortlisting the candidates for the personal interview, and the final selection list shall be on the basis of the marks secured in the personal interview, and no weightage will be given for the marks secured in a written test. This point we have to remember. Next है stipendiary trainee category 2, that is CAT 2 trainee. इसमें से हम लोग देखेंगे this post code है CAT 208, डिसिप्लिन है लैब असिस्टेंट फिजिक्स और केमिस्ट्री. यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 21, 14 फॉर अनरिजर्व. ओबीसी के लिए देयर इज नो वैकेंसी. फॉर एससी कैंडिडेट्स 4 वैकेंसीज आर देयर, एंड फॉर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स 3 वैकेंसीज आर देयर. And educational qualifications are minimum of 60% marks in HSC with physics, chemistry and maths. And for category 2, minimum age limit है 18 years and maximum age limit है 22 years as on the last date of receipt of online application. Method of selection कैसा है? Process of selection involves 3 stages. Stage 1 is a preliminary test, stage 2 is an advanced test, and stage 3 is a trade or skill test. So stage 1 preliminary test. Preliminary test में this examination will consist of 50 multiple choice questions and for 1 hour duration in the following proportion. Maths का 20 questions रहेगा, science का 20 questions रहेगा, general awareness का 10 questions रहेगा. 3 marks will be awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer. For unreserved and EWS category, the minimum qualification is 40%, and for OBC and SC it is 30%. Advanced test, all candidates qualifying in stage 1 to undertake an advanced test in their respective trade, and this test will comprise of 50 multiple choice questions with 3 marks awarded for each correct answer and 1 mark will be deducted for each incorrect answer, and test will be of 2 hours duration. And here also qualifying marks for unreserved and EWS categories 30% and for OBC and SC categories 20%. Okay, merit list of candidates will be prepared based on the scores obtained in the stage 2 only. In the event of tie, you just have to read this. ये देख लेना अगर tie होगा तो कैसा करना है. ठीक है, stage 3 कैसा रहेगा? Trade test रहेगा और skill test रहेगा. So based on the merit list prepared after stage 2 candidates, in each trade will be shortlisted for the trade test. ठीक है, so number of candidates to be shortlisted for trade test or skill test would depend upon the number of candidates qualifying for the stage 2 but shall not exceed 4-5 times the number of vacancies in each trade. ठीक है, ये सब देख लेना. Next, for category 1 and category 2 there is a training for 2 years. In case of category 1 candidates, first year में 16,000 stipend रहेगा, second year में 18,000 stipend रहेगा, and for category 2 students फर्स्ट ईयर में 10,500 स्टाइपेंड रहेगा एंड सेकेंड ईयर में 12,500 रहेगा, एंड वन टाइम बुक अलाउंसेस फॉर ऑल कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2 कैंडिडेट्स विद 3,000. दिस इज अ थ्योरेटिकल ट्रेनिंग, इन प्लांट ट्रेनिंग एंड फाइनल एब्जॉर्प्शन इंटरव्यू. दिस इज द वेटेज दैट यू हैव टू सी. इसको देख लेना. एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग कैटेगरी 1 कैंडिडेट्स विल बी एब्जॉर्ब्ड एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट C, एंड दिस इज देयर सैलरी 44,900 plus allowances. And for category 2 candidates, those who score 90% and above in the final assessment of stipendiary trainee CAT 2, then they will be given technician C, and for them the pay level is 25,500 plus allowances as admissible to the central government servant. And for other candidates, technician B is given and the level is 21,700 plus allowances. There is a bond also that you see. Category 1 and category 2 training has to execute a bond to complete the training and the serve department for the period of 3 years after absorption, and failing which candidates shall be liable to pay to the government a sum of equivalent to aggregate amount of stipend or bond amount along with interest thereon. ठीक है, देख लेना. These are the physical standards, height, weight, vision, जो भी है वो देख लेना अच्छे से. And this is the application fee for technical officer C, 300 rupees. For category 1 trainees 200, category 2 trainees there is 100 rupees fees. And these are the general instruction, just you have to read this. And students, these are the centers in which exams will take place. So you have to select the centers according to your convenience. And how to apply, these are the steps that you read. Now we will see how to apply the recruitment by going into website.
सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर द IGCAR रिक्रूटमेंट। सो गूगल में जाके IGCAR रिक्रूटमेंट डालने का। ओके, तो ये जो फर्स्ट ओपन होगा उसके ऊपर क्लिक करना है, रिक्रूटमेंट्स IGCAR। ओके, सो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 2 2021 पे ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हो। नाउ यहाँ पे क्लिक हियर फॉर अप्लाई ऑनलाइन आया है ना, तो इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, सो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा IGCAR का। यू हैव टू क्लिक ऑन द वन टाइम रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नाम लिखना है एज पर द 10th मार्कशीट। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम जो भी है सब अच्छे से फिल करना है। देन आफ्टर दैट यू हैव टू नेक्स्ट, ठीक है, एंड सबमिट। सो वंस यू सबमिट दिस, दैट यू विल गेट अ नोटिफिकेशन एज डियर कैंडिडेट, यू हैव कंप्लीटेड द वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑफ IGCAR ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस एंड काइंडली लॉग इन थ्रू योर रजिस्टर्ड लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू लॉग इन। अपने ईमेल आईडी पे OTP आएगा, ठीक है। जो भी पासवर्ड है जो हम लोग डाला था वो लिखने का, ये जो है वो लिख के हम लॉगिन करना है। सो स्टूडेंट्स, एक बार आपने लॉगिन कर दिया तो उसके बाद आपको ये सारे पोस्ट के लिए ओपन हो जाएगा। जो जो पोस्ट को आपको अप्लाई करना है वहां पे आप क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक हियर के ऊपर क्लिक करके आप अप्लाई करना है, ठीक है। सपोज अगर मुझे टेक्निकल ऑफिसर C ग्रुप A केमिकल के लिए अप्लाई करना है, देन आई विल क्लिक हियर एंड आई विल फिल ऑल डिटेल्स। यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है एंड एग्जाम सेंटर्स अपलोड करना है, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग। For more number of updates regarding chemistry related recruitments, you can subscribe the channel and share it with your friends. We will be meeting in our next video with more information. Thank you all for listening. See you all in our next video.